Tautology implications. The connectives and or this implies symmetric implies in both the directions, in the sense that P and Q is equivalent to Q and P. Mute yourself. P and Q is equivalent to Q and P. So this is one is and another is or. So this commutative law we know that P and Q is equal to Q and P or Q is equal to Q or P. Similarly, P double implication, this P implies Q, Q implies P is equal to Q implies P, P implies Q. Now on the other hand, P implies Q is not equal to Q implies P. P implies Q जो है वो Q implies P के बराबर नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज इन दोनों का ट्रूथ टेबल अलग अलग है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्स. For any statement formula P implies Q, the statement formula Q implies P is called as the converse. P implies Q है तो उसका उल्टा converse Q implies P. Negation of P implies negation of Q is called its inverse, and negation of Q implies negation of P is called as contrapositive. This is called the inverse and this is called as its contrapositive. उसका उल्टा लिखा है. ठीक है. But this is not equivalent to this. ये उसका inverse, converse या contrapositive inverse इस टाइप से वर्ड लिखा है. Therefore, P implies Q is equivalent to, this is equivalent to negation of P implies negation of Q implies negation of P, and Q implies P is also equivalent to negation of P implies negation of Q. Okay, now let's see tautology implications. A statement A is said to be tautologically imply. A statement is said to be tautologically imply if and only if A implies B is tautology. If A implies B is a tautology. So a statement is said to be tautologically imply if and only if A is. मैम आवाज कम आ रही है. A statement A is said to be tautologically implied if and only if A implies B is tautology. A implies B is read as A implied B, and this symbol is not a connective nor is A implies B a formula. So just as A double implication equivalent states that A and B are equivalent or that A implies B is a tautology, in a similar manner this states ये जो ये वाला symbol है A implies B states that A implies B is a tautology or A tautologically implies B. A tautologically implies B. इसको कैसे रीड करेंगे? ये वाले एरो को A tautologically implies B. A tautologically implies B, या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं? A implies B is a tautology. ये वाला जो सिंबल है, this symbol is called as equivalent. ये इक्विवेलेंट का सिंबल है. ये वाला भी सिंबल जो है वो ये A implies B and B implies Q and Q implies P, इस टाइप से. तो ये वाला जो सिंबल है, this symbol is read as A tautologically implies B. मतलब A tautologically implies B is true और all are true. सारे की सारी वैल्यूज कैसी होंगी इसकी? ट्रू आएंगी. Like over here just see P and Q. P Q का टेबल बना हुआ है. ये negation of P. Okay. P Q negation P negation Q. Negation P, this column is negation of this column.
negation of Q is negation of this line. Now P implies Q. P implies Q. True, true will give you true. True, false. Only in this case where true returns false is false. Otherwise, false true is true, false false is true. Similarly, negation of Q implies P. तो कौन से केस पे सिर्फ सेकंड लाइन में where T implies F is false. Otherwise, rest are true. So we have seen that this line is equivalent to this line. ये वाली जो लाइन है ये वाली कॉलम के बराबर है. This column is equivalent to this column. This we have already stated over here. देखो ये वाला जो हमने implication लिखा था P implies Q is equivalent to negation of P implies negation of Q. Okay, so we have proved this part. Now implications table. This implications table, this is read as tautologically. Tautologically. This is read as A tautologically implies B. कैसे रीड करेंगे? A implies B को A tautologically implies B. So this implications table is A and B tautologically implies P, means this entire thing will give you tautology. This entire thing will give you tautology. मतलब ये इसका पूरा का पूरा टेबल कैसा आएगा? True आएगा. Now I'll just draw one of the table. देखो मैं टेबल ड्रॉ P Q P and Q P and Q implies P. This डबल इम्प्लीकेशन मतलब ये यहाँ पर एक ही आएगा जैसे हम इम्प्लाइज के लिए कैलकुलेट करते हैं, पर यहाँ पर डबल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टोटोलॉजिकली ट्रू होगा सारा का सारा. नाउ लेट्स क्रिएट अ टेबल. ट्रू 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 false false true false false. Okay, now P and Q is true over here. True false will give you false. False true will give you false. False false will give you false. Okay, now this implies this. This column implies this column. So T implies T is true. F implies T is true. F implies F is also true. F implies F is also true. So all are tautology. This is tautology. All true tautology. So P and Q tautologically P and Q tautologically implies P. That is, it is all true. It is all true. सारा का सारा क्या है? ये true है. ठीक है, तो ये जो सारा टेबल है ये सारे के सारे जितना ये प्रपोजिशन दिया हुआ है ये दिया हुआ है, दिस इज ऑल टोटोलॉजिकली ट्रू. देखो हम ये वाला भी कॉलम बना के देख लेते हैं. Implies Q. Okay, now this implies Q. T is T. F is T. FT is also T, and last FF is also T. So this is also tautologically true. Similarly, if you see this also, this is also tautologically true. All these implications up to here are all tautologically
ट्रू, टोटोलॉजिकली है ये। तो इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं ए टोटोलॉजिकली इम्प्लाइज बी, ए टोटोलॉजिकली इम्प्लाइज बी। इसको कैसे रीड करेंगे? नेगेशन ऑफ पी टोटोलॉजिकली इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू। सो दिस विल गिव यू ऑलवेज ट्रू वैल्यू। इसको भी करके देख सकते हैं। Negation of P, P implies Q. Okay, this is negation of P. Negation of P. Okay, true, false, true, false, this false, true, this false is true. Okay, now P implies Q, this P implies Q. P implies Q, this is true, this is false, this is true, this is also true. Okay, now this implies this. Negation of P tautologically implies P imply Q. Okay, now false implies true is true, false implies false is also true, true implies true is also true, and true implies true is also true. F2, FF, TT, TT. Okay, so all these implications are tautologically implies, all are true. समझ में आया यहाँ तक? Okay, let's move to the next slide. Now there is a theorem. If H1, H2, Hn and P imply Q, then H1, H2, Hn implies P implies Q. This is a theorem. Now we'll prove this theorem. If H1, H2, Hn and P imply Q, then this means then H1, H2, Hn imply P imply Q. ठीक है, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर implies लिखा है. Now from our assumption we have H1, H2, Hn and P imply Q. ये दिया हुआ है. Tautologically imply. This assumption means that this implies this is a tautology. Using the equivalence, P1 implies P1, P2 implies P3 is equivalent to P1 and P2 and P3. So we can say that this left hand side H1, H2, H3 implies P implies Q is tautology. This is we need to prove that this is a tautology. तो tautology में ये जो हमने preposition use किया हुआ है, ये जो हमने preposition use किया हुआ है, implies, this implies P1 implies P2 implies P3. इसको ब्रैकेट दिया हुआ है, ये implication को हमने एंड में कन्वर्ट किया. ये टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट है. निगेशन हो जाता है, वो कट जाएगा, और कट जाएगा तो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो लाइकवाइज दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस. ओके, इम्प्लाइज जो है वो एंड के बराबर हो जाए, तो इम्प्लाइज को हमने एंड के बराबर ले लिया. ये एंड जो है वो इम्प्लाई के बराबर, ये एंड इम्प्लाई के बराबर इक्विवेलेंट है ना. ये इक्विवेलेंट है, एंड इज इक्विवेलेंट टू इम्प्लाई, दिस एंड इज इक्विवेलेंट टू इम्प्लाई. Okay,
implies q, यहाँ आ गया ये and equal implies tautology. This is one of the theorem. Okay. Functionally complete set of connectives. Any set of connectives in which every formula can be expressed in terms of an equivalent formula containing the connective from this set is called as functionally complete set of connectives. मतलब कोई भी set of connectives मतलब जो भी हमारे and और implication वगैरह यूज किए हुए हैं, arrow, single arrow, double arrow, then these are equivalent formula containing the connectives from this set is also called functionally complete set of connectives. मतलब एक set के formula को हम दूसरे set में change कर सकते हैं, and को और में convert करना है, same statement को and को और में convert करना है और को and में convert करना है, then that is called as functionally complete sets of connectives. It is so assumed that such a functionally complete set does not contain any redundant connectives. Redundance means repeated connectives नहीं होंगी. That is connective which can be expressed in terms of other connectives. मतलब सेम स्टेटमेंट मीनिंग नहीं बदलेगा बट उसका जो फॉर्मूला है वो दूसरे तरीके से लिखा जाएगा. जैसे डिवाइड को आपको स्लैश यूज नहीं करना है. डिवाइड शुड बी डन यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन शुड बी डन यूजिंग सक्सेसिव एडिशन. ओके. द फॉर्मूला value result will be same otherwise, and what changes is the way of writing. इसको कैलकुलेशन, वे ऑफ कैलकुलेशन और फॉर्मूला चेंजेस, फॉर्मूला बदल जा रहा है बट उसका फाइनल रिजल्ट सेम आ रहा है. सो इन ऑर्डर टू अराइव एट अ फंक्शनली कंप्लीट सेट वी फर्स्ट एग्जामिन द फॉलोइंग इक्विवेलेंस. देखो इस इक्विवेलेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये इक्विवेलेंस लिख लो. P इक्विवेलेंट टू P implies Q and Q implies P. इसका मीनिंग क्या होता है? ये P implies Q and Q implies P. P implies Q, Q implies P. This is called as equivalence. This is called as implies. ये वाला दोनों अगर इकट्ठे लिख दिए तो ये दोनों साइड से implication है. P implies Q, Q implies P, and this is equivalence. So this is one of the formula, equivalence formula, which you need to remember कि P implies Q and Q implies P. अगर ऐसा एरो दिया हुआ है तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है. This equivalence suggests that in any formula, मैम एक बार फिर बताइए. ये लाइन है, ये जो एरो दिया हुआ है, इस एरो का मतलब ये है कि इसको दो बार लिखना है इस तरह से. ये फॉर्मूला है. दिस इज अ फॉर्मूला. ये फॉर्मूले का मतलब है कि P implies Q, P implies Q and Q implies P, Q implies P. ये एक नया ऑपरेटर है, नया सिंबल दिख रहा है आपको. ये सिंबल का मतलब है P implies Q, Q implies P. जबकि हमने इक्विवेलेंस का फॉर्मूला में, देखो इक्विवेलेंस दिखा देती हूँ मैं आपको. इक्विवेलेंस में हमने ये सिंबल और ये सिंबल यूज़ किया था. इक्विवेलेंस के लिए हमने ये सिंबल और ये सिंबल यूज़ किया है. ठीक है. इसके बाद में हमने टोटोलॉजिकली ट्रू के लिए क्या यूज़ किया है कि टोटोलॉजी है ये वाला जो सिंगल वाला है, ये वाला टोटोलॉजिकली इम्प्लाई, इसके लिए ये वाला यूज़ किया है. ए टोटोलॉजिकली इम्प्लाइज बी, मतलब ये इसका जो आंसर आएगा ए इम्प्लाइज बी का वो ट्रू आएगा. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ए इम्प्लाइज बी इज टोटोलॉजी. इसका मीनिंग ये है कि ए इम्प्लाइज बी इज टोटोलॉजी. ए इम्प्लाइज बी जो है वो टोटोलॉजी आएगा. ये वाले एरो का मीनिंग. ठीक है. तो हमारे पास में ये 3-4 टाइप के एरोज है. एक हमारे पास में ये वाला है, ये इक्विवेलेंस को डिनोट करता है. दूसरा हमारे पास में ये वाला है जो टोटोलॉजिकली ए इम्प्लाइज बी टोटोलॉजी को डिनोट करता है. और ये वाला तो इम्प्लाइज है, सिंपल इम्प्लाइज, पी इम्प्लाइज क्यू. ठीक है. तो यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है, इस सिंबल का मीनिंग है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P. तो ये फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे अभी की थ्योरम में, इसके आगे जो भी इक्विवेलेंस निकालना है. सो दिस इक्विवेलेंस सजेस्ट दैट इन एनी फॉर्मूला वी कैन रिप्लेस द पार्ट. उसके पार्ट को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं. इस सिंबल को हमने रिप्लेस किया किससे? इससे और इससे. सो every thus the part means any part which is itself a formula
containing the bidirectional biconditional by an equivalent formula, not containing the biconditional, मतलब biconditional contain कर सकता है या फिर biconditional contain नहीं कर सकता. This is called as biconditional one, which is P implies Q and Q implies P. So thus biconditional can be replaced in any in an in a formula. This is conditional, एक बाय कंडीशनल है. बाय कंडीशनल मतलब दोनों साइड से कंडीशन, P implies Q and Q implies P. तो ये सिंबल का नाम क्या हो गया? बाय कंडीशनल सिंबल, दोनों साइड से. अब इसके ऊपर से ये क्वेश्चन है, राइट इक्विवेलेंट फॉर्मूला फॉर दिस. इस पूरे का इक्विवेलेंट फॉर्मूला लिखना है विच डज नॉट कंटेन बाय कंडीशनल. बाय कंडीशनल इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? दिस सिंबल इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल. ये सिंबल का मतलब क्या है? बाय कंडीशनल. दिस सिंबल इज बाय कंडीशनल. ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब क्या हुआ? Q implies R and R implies Q. इसमें R implies P and P implies R. तो हमको ये वाला जो सिंबल है इसको नहीं होना चाहिए हमारे फॉर्मूला में. इस हमारे फॉर्मूला में, हमारे स्टेटमेंट में ये सिंबल नहीं होना चाहिए. तो ये सिंबल नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम रिप्लेस कर देंगे. देखो, P and Q implies R and R implies Q. Q implies R, R implies Q implies R, R implies Q. RP, R implies P and P implies R. So thus this is the equivalent formula which contains no biconditional. Biconditional symbol is this. This symbol is called as biconditional. ये वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? बाय कंडीशनल. तो ये बाय कंडीशनल निकाल के आपको बनाना है. इसमें निकल गया है और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है बाय कंडीशनल का? दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाय कंडीशनल. ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है बाय कंडीशनल का. ओके, P implies Q, Q implies P, and there is one more problem. Equivalence formula for this, Q implies R. ये simple है, Q implies R and R implies Q. Q implies R and R implies Q. अब this which contains biconditional nor the conditional. This equivalence formula contains biconditional nor the conditional. Should not contain, this formula should not, which contains no biconditional nor neither biconditional, neither biconditional nor neither biconditional nor the conditional. ये conditional है, इसको conditional operator बोलते हैं, इसको biconditional operator बोलते हैं. So this conditional and biconditional दोनों ही नहीं होना चाहिए. तो Q implies R and R implies Q according to the previous formula. अब ये implies है, इसको change किया negation of Q और R, इसको implies को change किया negation of R और Q. So thus this formula is the required formula of this containing no conditional biconditional symbol. इसका ये सिंबल का, इस स्टेटमेंट का, इस प्रपोजिशन का ये इक्विवेलेंट फॉर्मूला बना विच कंटेन्स नो कंडीशनल बाय कंडीशनल स्टेटमेंट. ये बाय को कन्वर्ट कर दिया कंडीशनल स्टेटमेंट में, ये कंडीशनल स्टेटमेंट को कर दिया और में कन्वर्ट. ओके,